Hello everyone, welcome once again. So how are you all? Can you all see me? क्या आप लोग मुझे देख पा रहे हैं? क्या Can I get the answer into the chat box? क्या आप लोग मुझे देख पा रहे हैं? Are you able to see me? Yes, no. आपको मेरी आवाज सुनाई दे रही है? Okay, Monica ji, thank you very much for your answer. Yes, okay. So let me just check everything. If everything is okay, and then we can start the session. Okay. So I'm really thankful to all of you जो वंडरफुल पेरेंट्स, स्मार्ट पेरेंट्स, इस सेशन के लिए आपने स्पेसिफिकली टाइम निकाला और इस सेशन में आए एंड यू आर रेडी टू लर्न सो मेनी थिंग्स ओवर हियर. तो आई वेलकम यू ऑल इनटू द सेशन एंड एज यू ऑल नो एवरी फोर्टनाइट, हर 15 दिन में हम इस तरह का सेशन करते हैं जिसमें आप लोगों के जो प्रॉब्लम्स है, आप लोगों के जो पेरेंटिंग के रिलेटेड चैलेंजेस है, उसको हम सॉल्व करते हैं. एंड बिलीव मी, आज का सेशन बहुत ही वंडरफुल होने वाला है. जो जितने भी लोग आज के सेशन में अवेलेबल है, जितने भी लोग आज के सेशन में आए हैं, बिलीव मी, आप लोग ऐसी बढ़िया चीज लेके जाएंगे कि यू विल डेफिनेटली फील कि नहीं, ऐसा आज से पहले कभी भी कोई पेरेंटिंग सेशन में हमें इस तरह की इंफॉर्मेशन, इस तरह के प्रैक्टिकल टिप्स हमें नहीं मिले हैं. ओके, सो बिफोर वी गो फर्दर, मैं जानना चाहूंगा कि कितने लोग एक्साइटेड हैं आज के इस सेशन में, मतलब जानने के लिए कि क्या होने वाला है. प्लीज टाइप इनटू द चैट बॉक्स मी. यस, I can see many. Oh, Xiaomi M201 says me and Kushbuji says me. Okay, Xiaomi का जिनका भी फोन है, मैं आपको रिक्वेस्ट करूंगा हाथ जोड़ के कि अगर आप अपना नाम रख पाए तो हम आपसे कम्युनिकेट अच्छी तरह कर पाएंगे. तो आप अपना नाम चेंज कर सकती है. पूजा जी says me. Very good. Okay, wonderful everyone. Okay, welcome to the session and thank you very much for your answers, your enthusiasm. I really like it. मैं जब भी, मतलब मैं हर 15 दिन में ये वेट करता हूं कि ये सेशन आए और मैं आप लोगों के साथ कम्युनिकेट कर पाऊं, बिकॉज आई रियली फील द एनर्जी कि आप लोग कितना एंथुजियास्टिकली हम लोगों से कम्युनिकेट करते हैं. राइट? ओके, यस, ओके. सो आज का हमारा जो वर्कशॉप है, इट्स नेम इज केओस टू काम. तो कोई मुझे ये बता पाएगा कि इस वर्कशॉप में एग्जैक्टली क्या होने वाला है? एनीवन? पूजा जी या फिर खुशबू जी, मोनिका जी, एनीवन वुड लाइक टू शेयर एनीथिंग? मतलब आपको लगता है नाम से क्या पता चल रहा है? ओके, आई बिलीव एवरीवन इज शाय लिटिल बिट. क्या बात करें, कौन सी बात करें, बट नो इश्यूज. वी हैव मेनी थिंग्स. ओके, यस, ओके, नित्या जी. वंडरफुल. सो नित्या जी, वुड यू लाइक टू शेयर हाउ टू मैनेज द थिंग्स वेल? ओके, वंडरफुल. आकांक्षा जी ने आंसर दिया है. मोनिका जी ने हाउ टू अप्रोच टॉडलर इश्यू विद द डिफरेंट माइंडसेट. वंडरफुल. ओके, नॉट एबल टू चेंज माय नेम. ओके नित्या जी, दैट इज फाइन, कंप्लीटली फाइन, कोई इश्यू नहीं है. At least I know that Xiaomi M210, okay, 7BI is Nitya ji. Okay, कोई बात नहीं है. Wonderful. So let me just share my screen. Okay, so today's workshop is about chaos to come. Okay, it is a parenting workshop about balancing your life with the toddler. ओके, और इसी के साथ मैं आप थोड़ा सा हमारा इंट्रोडक्शन देना चाहूंगा और उसके बाद हम बात करते हैं कि इस सेशन में क्या होने वाला है, किस तरह से होने वाला है. ओके, सो वी आर स्पार्टन किड्स एंड स्पार्टन किड्स जो हम 7 डिफरेंट कैटेगरीज में हम बच्चों के लिए एजुकेशनल आइटम्स बनाते हैं. एजुकेशनल हम फ्लैश कार्ड्स बनाते हैं, पजल्स हैं, गेम्स है, AI फ्लैश कार्ड है जिसका वंडरफुल वर्कशॉप हमने लास्ट टाइम देखा था और उसको हमने गिफ्ट गिव अवे भी दिया था. सो इस तरह के किड्स के लिए एजुकेशनल प्रोडक्ट्स हम बनाते हैं और हमने ये सोचा कि भाई हम प्रोडक्ट्स तो डेफिनेटली दे रहे हैं, हाई क्वालिटी प्रोडक्ट्स दे रहे हैं. आफ्टर सो मेनी रिसर्च हम प्रोडक्ट बनाते हैं और उसको हाई क्वालिटी प्रोडक्ट हम कस्टमर को डिलीवर करते हैं. बट इसके अलावा और क्या कर सकते हैं? देन वी कम अप विद द आइडिया ऑफ स्पार्टन पेरेंटिंग एकेडमी, जिसमें हमारा ये मिशन है कि हम पेरेंटिंग जर्नी को, आपकी पेरेंटिंग जर्नी को एकदम फन बनाए, जॉयफुल बनाए. और उसके लिए हम क्या करते हैं? हम वैल्यू एडिशन करते हैं आपके लिए, आपकी पेरेंटिंग जर्नी को फन बनाने के लिए, जॉयफुल बनाने के लिए हम पेरेंटिंग वर्कशॉप्स करते हैं. जैसे कि ये वर्कशॉप में आप हैं, इट इज अ ऑनलाइन वर्कशॉप, बट इसके अलावा हम ऑफलाइन वर्कशॉप्स भी करते हैं. ओके, इसके अलावा हम इंटरव्यूज लेते हैं. पेरेंटिंग की नीश में बहुत सारे लोगों ने बहुत सारा अलग अलग काम किया होता है, जैसे कि पीडियाट्रिशियंस है, आयुर्वेदाचार्यस है, साउंड हीलर्स हैं,
पेरेंटिंग इन्फ्लुएंसर्स हैं, पेरेंटिंग के बारे में मतलब मल्टीपल बच्चों को अलग अलग प्रॉब्लम्स होते हैं, एडीएचडी को कैसे किया जाए, एड्रेस किया जाए। सो ऐसे बहुत सारे अलग अलग लोगों ने अलग अलग सेगमेंट में पेरेंटिंग में काम किया होता है, तो उन लोगों को हम इस प्लेटफॉर्म पे लेके आते हैं, एसपीए प्लेटफॉर्म पे, और उसके इंटरव्यूज हम लेते हैं आप लोगों के साथ, वो इंटरव्यूज वगैरह शेयर करते हैं, हम पॉडकास्ट करते हैं, यूट्यूब पे हमारी ये सारा कंटेंट आपके लिए अवेलेबल है, एंड एज वेल एज हम वेबिनार्स भी करते हैं जिसमें हम इंफॉर्मेशन देते हैं पेरेंटिंग के बारे में। सो अगर ये सारी चीजें आपको चाहिए, मतलब ये सारी चीजें विच इज कंप्लीटली फ्री ऑफ चार्ज, कंप्लीटली कॉम्प्लीमेंट्री फॉर ऑल ऑफ यू, तो आप इस सारे कंटेंट को कंज्यूम कर सकते हैं और अपनी पेरेंटिंग जर्नी को फन बना सकते हैं, आपके प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन अपने ले सकते हैं। सो अगर ये सारी चीजें आपको एक्सेस करनी है तो उसका वन स्टॉप सॉल्यूशन है कि आप स्पार्टन पेरेंटिंग एकेडमी का जो ग्रुप है, हमारा फेसबुक का ग्रुप, उसके आप उसमें आप ज्वाइन कर लीजिए, तो आपको रेगुलरली अपडेट मिलती रहेगी। आप हमें हमारे सोशल मीडिया पे भी फॉलो कर सकते हैं जिसमें आपको सारी इंफॉर्मेशन मिलेगी। तो मैं अपनी टीम को बताऊंगा कि आप स्पार्टन पेरेंटिंग एकेडमी का हमारा जो लिंक है वो शेयर कर दीजिए ताकि सारे लोग उस ग्रुप को ज्वाइन कर पाए। और उसके साथ ही मैं ये भी बताना चाहूंगा कि हमारा जो नेक्स्ट वर्कशॉप है, मतलब कि आज से 15 दिन के बाद फिर से हम सैटरडे को मिलेंगे, तो वो जो वर्कशॉप है वो कौन सा है? ओके, सो वो वर्कशॉप है, इट इज अबाउट स्किल फॉर लाइफ। मतलब कि जब हमारे टॉडलर्स है उसको उसकी एज में कौन सी स्किल्स हमें सिखानी चाहिए जो उसको लाइफ टाइम उसके साथ रहे, ऐसी 6 स्किल्स हम कवर करने वाले हैं। और हमारे पेरेंटिंग मेंटर आपको काफी अच्छी टिप्स एंड ट्रिक्स बताएंगे नेक्स्ट वर्कशॉप में कि वो 6 स्किल्स को कैसे इंकलकेट किया जाता है। ओके, सो आई वुड सजेस्ट कि आप अपने फ्रेंड्स के साथ भी ये शेयर करें, एज वेल एज अपने ग्रुप, अपने सोशल मीडिया पे भी शेयर करें कि भाई ये वर्कशॉप्स को अटेंड करें। ओके, ताकि उन लोगों की पेरेंटिंग जर्नी भी काफी अच्छी रहे। ओके, सो या with this I would like to ask you all some questions, okay, और मैं उसके आंसर चाहता हूं। so are you all ready to give me some answers, everyone please? Okay, write in the chat box yes if you are ready to give me some answers. Okay, yes नित्या जी, it is really interesting and आपको बहुत ही मजा आएगा, बट आज का वर्कशॉप भी बहुत ही इंटरेस्टिंग है। मैं सबसे पहला ये सवाल पूछना चाहूंगा कि आप लोगों की, आप एज अ पेरेंट्स जो लाइफ पहले थी, ओके, जब आपका यू 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 वर नॉट हैविंग अ किड, ओके, और अभी जब आपकी लाइफ में आपका एक बच्चा है, चुन्नू मुन्नू है, ओके, सो पहले की लाइफ में और इस लाइफ में क्या कोई फर्क है? आपको लगता है कि यस देयर इज अ डिफरेंस? अगर आपको लगता है यस देयर इज अ डिफरेंस, देन राइट यस इनटू द चैट बॉक्स। ओके, ओके, वंडरफुल, बहुत सारे लोगों ने आंसर दिया यस। ओके, okay, get confidence in being messy, Monica ji, wonderful. Okay, now my second question is, do you feel sometimes overwhelmed? मतलब कि कई बार आपको लगता है कि यार इतनी सारी चीजें हम नहीं कर पा रहे हैं, राइट? कौन सी चीज करूं, कौन सी चीज ना करूं, ऐसा आपको सवाल होता है, ऐसा आपको कंफ्यूजन होता है क्या? ओके, अगर आपको ऐसा कंफ्यूजन होता है, देन राइट सी, कंफ्यूजन, कंफ्यूजन का सी, राइट सी इनटू द चैट बॉक्स प्लीज। Yes, Pooja ji says yes. Okay, yes, exactly. Nitya ji, Akanksha ji, everyone is saying C. So yeah, आप लोगों को ये प्रॉब्लम होता है। मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आपको कई बार लगता होगा कि समय को मैनेज करना, टाइम को मैनेज करना, स्पेशली जब हमारे घर में एक चुन्नू मुन्नू है, एक छोटा सा टॉडलर हमारे घर में है, उसके साथ समय को मैनेज करना, सारी चीजों को मैनेज करना, लाइफ को मैनेज करना, वो बहुत ही डिफिकल्ट है। उसको मैनेज करना बहुत ही मतलब तकलीफ है। आप कितना संभालेंगे? घर में खाना बनाना है, हमारे जो पेरेंट्स है उसका ध्यान रखना है, एज ए पेरेंट हमारे किड का ध्यान रखना है, उसको स्कूल के लिए तैयार करना है, बहुत सारी चीजें आपके प्लेट में है, बट आप नहीं पहुंच पाती, राइट? अगर आपको ये सारे प्रॉब्लम्स, इस सारे चीजों को आप फेस कर रहे हैं, सो यू आर इनटू द राइट प्लेटफॉर्म राइट नाउ, यू आर इनटू द राइट वर्कशॉप राइट नाउ। व्हाई? बिकॉज एक प्रूवन मेथोडोलॉजी है किसी भी चीज को, अपने टाइम को मैनेज करने के लिए, जो सर आइजनहोवर ने फाइंड आउट की थी। ओके, और वो अगर आप मानेंगे नहीं, बट आज इस वर्कशॉप में आप जो सीखने वाले हैं, ओके, वो बहुत सारे जो बिजनेसमैन होते हैं, वो हजारों लाखों रुपए दे के वो सीखने के लिए अलग अलग वर्कशॉप्स अटेंड करते हैं। ओके, और हम वही चीज आप लोगों के लिए यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म पे लेके आए हैं, एंड दैट इज केओस टू काम। कैसे अपने टाइम को, कैसे अपनी लाइफ को मैनेज करें, वो इस वर्कशॉप में आप सीख के देंगे। सो माय कमिटमेंट टू यू कि आज का वर्कशॉप खत्म होने तक आपको काफी सारी चीजें क्लियर हो चुकी होंगी कि आपके टाइम को, आपकी लाइफ को मैनेज कैसे करना है, उसको बैलेंस कैसे करना है, राइट? सो
फॉर दैट यस, आज के वर्कशॉप में मैं हर बार जैसे बोलता हूँ कि हम लोगों ने आपके साथ वर्कबुक शेयर की होगी, वो वर्कबुक आप डाउनलोड कर लीजिए और अगर हो सके तो उसकी प्रिंट आउट निकाल लीजिए। अगर आपके वो पास वो प्रिंट आउट है तो बहुत ही बढ़िया है, क्योंकि आज का वर्कशॉप जो है वो पूरा प्रैक्टिकल एक्टिविटी बेस्ड है, उसके अंदर आपको बहुत सारी चीजें लिखनी है, ओके, जिससे कि आपको क्लैरिटी मिलेगी। ओके, अगर आपके पास वो वर्कबुक नहीं है, आप उसकी प्रिंट आउट नहीं निकल पाए तो कोई इश्यू नहीं है, आप एक डायरी ले सकते हैं, इस तरह की डायरी, और आपके पास एक पेन होना चाहिए। ये डायरी और पेन होना आपके पास बहुत जरूरी है, ताकि आप इस वर्कशॉप से मैक्सिमम ले पाए। इस वर्कशॉप में बहुत सारी नोट्स आपको बनानी होंगी, बहुत सारी चीजें आपको लिखनी होंगी, तो उसके लिए आपके पास डायरी और पेन होना जरूरी है। ओके, पार्टिसिपेट कीजिए, जितना अच्छा पार्टिसिपेट करेंगे उतना ही जल्दी आपके प्रॉब्लम सॉल्व होंगे और आप जल्दी जल्दी अपनी पेरेंटिंग जर्नी में आगे बढ़ेंगे। ओके, और उसको जॉयफुल बनाएंगे। ओके, एंड यस, वेन एवर वी से, या फिर अगर आप कर सके तो थ्रू आउट द वर्कशॉप अपना जो कैमरा है वो ऑन रखिए, हम आपको देखना चाहेंगे। आपकी स्माइल बहुत ही बढ़िया है आप सबकी। ओके, सो हमें मजा आएगा जब हम आपको हंसते हुए देखेंगे, जब हम आपको एक्टिविटी करते हुए देखेंगे। ओके, सो विद दिस आई वुड लाइक टू वेलकम our parenting mentor and the educator Miss Sachi Seth, जिन्होंने बीएससी किया हुआ है, एज वेल एज शी इज इनटू दिस फील्ड, मतलब पेरेंटिंग एंड चाइल्ड डेवलपमेंट के फील्ड में तकरीबन 9 साल से 8 साल से ज्यादा वो इस फील्ड में है और बहुत सारे पेरेंट्स को वो गाइड कर चुकी है। सी इज अ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट। ओके, सो बहुत सारे पेरेंट्स को वो गाइड करती है कि किस तरह से चाइल्ड सोचते हैं, किस तरह से काम करते हैं, एज वेल एज शी इज ऑल्सो शी हैज कंप्लीटेड हर डिप्लोमा इन अर्ली चाइल्डहुड एजुकेशन। यूके एंड यूएसए बेस्ड वर्कशॉप्स हैं जो उन्होंने किए, जो स्पेसिफिकली फ्लैश कार्ड के लिए हैं। शी इज ऑल्सो डूइंग हर पीएचडी into this, okay, and she's writing she's doing a research on the flashcard, वो public paper पे publish करने वाली है, right? So yeah, Miss Sachi said I would really request Sachi ma'am to come on and yes, take over this session, ma'am. Good afternoon, all the lovely parents over here. It is great to have you all in this workshop. Today we are going to talk about how calmness can be developed in our routine. So chaos to calm. तो हम ऐसा बोल सकते हैं कि बच्चे chaos है और हम काम है, या हम chaos है और बच्चे काम है। क्या बोले सर? It is really difficult to identify. It is indeed. So before we start, we have mothers and fathers, I guess. So can I have in chat box how many, if you're a mother, write M, if you're a father, write F. So we just come to know the ratio of people attending the workshop. Okay, so maximum mothers, right? That means the duty of attending the workshop, taking care of the child work and family responsibility goes to mother and father both rather. But over here today in the workshop, we have more mothers. So first of all, I would like all of you to turn your cameras and give a bravo to yourself. And we will click a picture. So I'll have bravo. So can we have the team, sir, who can click the picture for us? Yes, yes. Team सब लोग अपना कैमरा ऑन कर रहे हैं and everyone is stepping their back. तो एक बहुत ही बढ़िया सा पिक्चर लिया जाए. And yes, माधव जी, especially you turn on your camera. क्योंकि ताकि मुझे लगे कि नहीं मेरे साथ कोई है इस सेशन के अंदर. Wonderful, everyone. Yes, great. And can we have a smile? 1, 2, 3. Team, capture the picture. Smile. Okay, great. This bravo was that we are doing a great job. We are actually that superpower जिसके 2 हाथ इधर है, फिर 2 हाथ इधर से है, 2 हाथ इधर से है. It's like we have a lot of power. Beginning with the workshop, I'll be sharing my screen. And first of all, I would like to ask a question to the parents. You just need to type in the chat box, okay? Are you able to manage the child and work? Yes or no? If it's a yes, write Y. If it's a no, write N. Be open, be honest. Don't worry, nobody's going to judge you because we all are here for the same. Okay. Monica ji says N. Chetna says sometimes no. Nitya ji says 50-50.
Okay, wonderful, great. Akanksha ji says 80-20, Priya ji says sometimes not. Wonderful. Yes. So this workshop is to make your life balanced. Simple. It is not a rocket science. It is a very normal thing that I'm going to share with you today. ये आप रूटीन में भी कर सकते हैं. It is not कुछ आउट ऑफ द बॉक्स नहीं है. जो आपके सराउंडिंग में है हम उसे ही सेटल करने वाले हैं. So yes, let's begin. I'm going to share my screen with the beautiful. I hope everybody can see my screen. Yes, ma'am, it's visible. It's visible, right? Just a minute. Yes, about me, I would like to even add that yes, even I'm a parent. So this balancing life it's very important. And as we see, there is this circle. Why? Every time we have a roadmap. Today we are having a circle because this is the circle that we follow. It is necessary. So first we will see how to balance life for parents, the most important thing. As you see the image, wait, how many of mothers, parents can relate the life with this image? कितने लोग इससे relate कर सकते हैं? Please write in the chat box, me, if you can relate. Okay, yeah, someone with the name Galaxy says me. It's a very common image that we are having. Yes. So let's see. When we say we balance, have you ever tried to put more weight this side? So let's give pressure to work. तो क्या बच्चे संभाल पाएंगे? No, not possible. If we try and manage the child, we will lose ourselves. तो क्या बच्चे संभालना छोड़ दे? Cannot be done, right? It's a very normal thing. We have to manage. And that is why we have this kind of a protocol. I can do everything. I can do everything. हर रोज सुबह ये 3 line. I can do everything. 3 words. I can do everything. Rather 4. हर रोज सुबह बोलने का, उठने का और see the balance जादू है. सुबह सुबह मिरर के सामने उठ के बोलो I can do everything. I can do everything. Sad face से बोलोगे तो कुछ नहीं होगा. Get a smile on your face. It's balancing life, right? So mothers, can I have all the cameras on and say, just murmur, okay? Murmur with a smile. I can do everything. Keep yourself mute and say, I can do everything. 3 times, loud. Loud. मुझे आपकी pitch से पता चल जाना चाहिए. I can do everything. Do you feel positive? Give a thumbs up if you feel positive. सिर्फ बोलने से पॉजिटिव फील कर रहे हैं सर, तो सोचिए करेंगे तब कैसा रहेगा. डेफिनेटली मैम, अगर वो इम्प्लीमेंट करते हैं, जैसे जो वर्कशॉप का आज जो आप टिप्स एंड ट्रिक्स देने वाली है, अगर वो इम्प्लीमेंट करते हैं तो वो एक नेक्स्ट लेवल पे होगा. आई एम डैम श्योर अबाउट दैट. इट इज ऑल रिसर्च बेस्ड सर. ये कोई टिप्स एंड ट्रिक्स जो जितने भी हम प्रोवाइड करते हैं वो सारी रिसर्च बेस्ड होती है. क्यों? क्योंकि इट इज बीन सेड दैट ये सारी चीजें इट्स रनिंग फ्रॉम हिस्ट्री. ऐसा नहीं है कि कुछ नया 2023 में आया, एक्सेप्ट डिमोनेटाइजेशन जो 2016 में आया था, वो ही कुछ नया था, और कोरोना. उसके अलावा ये सारी चीजें हैं जो कंटिन्यूअस रन कर रही है. तो दिस इज रनिंग. जो उनके पेरेंट्स ने भी ये किया होगा, हम भी वही कर रहे हैं. हमारे ग्रैंड पेरेंट्स ने भी यही बैलेंसिंग किया होगा. सो वी आर गोइंग टू मेक यू अंडरस्टैंड हाउ टू बैलेंस life for parents. The most important thing, think about yourself. 3 tips for balanced life with the child. Most important, learn to set priorities. कितनी मम्मियां ऐसी है जो सुबह चेकलिस्ट बनाती है? Please write me if you are making any checklist in your mind also and on paper also.
जो जॉब करते होंगे वो लिखते भी होंगे. प्लीज राइट डाउन इन द चैट बॉक्स टू डू लिस्ट, जिसे हम बोलते हैं टू डू लिस्ट, प्रायोरिटीज. Okay, Monica ji says every night. Akanksha ji says me. Yes. Okay. Okay. Yes. Nitya ji says no, ma'am. So this is the most important thing. You should learn to set your priorities. अगर आप बीमार पड़ गए तो चीजें कैसे नॉर्मल चलेगी, ये सोचा है कभी आपने? यू आर अ ह्यूमन बीइंग. पेरेंट्स जितने भी आज वर्कशॉप अटेंड कर रहे हैं, क्या आप मशीन है? आर यू अ मशीन that I'll oil you, I will repair you, and you will be ready? Not right. So you're not a machine, you are a human. So there are cycles in human. You may fall sick, you may get tired, you may have mood swings. तो उस टाइम पे when you have a set priorities, चीजें मैनेज हो जाएगी और मेसी नहीं होगी. And when these things happen, the life is smooth, it becomes balanced. बच्चे को स्कूल पिकअप करना है, वो प्रायोरिटी है. पर अगर एक मीटिंग चल रही है और उस गैप में बच्चे को पिकअप करने जाना है, तो क्या प्रायोरिटी रखोगे? घर पे गेस्ट आ रहे हैं और बच्चा बीमार है, so what is your priority? The child's sickness. The guest can be attended from other family members also. There are sometimes हम सिनारियो सोचते हैं, अरे मुझे तो ये भी करना है, मुझे तो ये भी करना है, ये भी करना है. No, you cannot reach everywhere. इसमें से सुपरमैन कौन है? Are any of the parents सुपरमैन? मैंने तो सुना था इधर सारे सुपर मॉम्स है. क्या सुपरमैन पेरेंट भी है कोई? So that means that you cannot be everywhere. And when you cannot be everywhere, I would request you to set down your priorities. So when you start your day, make sure that you have tasks to do first. That is, make breakfast, get up your children, make them ready, put them to the school, then come back home, prepare lunch. जो भी आपका रूटीन है, आप प्रायोरिटाइज करिए. इनमें से कितने पेरेंट्स ऐसे हैं जो मूवीज हर रोज देखते हैं, एवरी डे? कितने पेरेंट्स ऐसे हैं जो ब्रश सुबह किया, फिर 1 घंटे के बाद किया, फिर दूसरे घंटे के बाद ब्रश ही किया? नो, राइट? सो दैट मीन्स ब्रश इज द प्रायोरिटी इन द मॉर्निंग. फिर 1 घंटे के बाद ब्रश प्रायोरिटी नहीं होता है, फिर कुछ और प्रायोरिटी होता है. So make sure that you decide the importance of your work. Okay? Are all the parents with me? Priority, we will set our priority. Please give me a thumbs up if you all are with me. Everyone in the morning will set up their priority. Yes. Then moving to the next. Make yourself available when required. So this means mummy is everywhere. Huh? Mothers, can I have your reply? Are you everywhere? Like air, like water, like sunlight. Are you everywhere? Sir, are you everywhere? You are a father and one of the parent also. So are you everywhere? Definitely not, ma'am. I can do one thing at a time. I cannot be everywhere. Okay, it is not possible at all. That means mothers are special. They can do 6 things at a time. Oh. And I'll help you to list down those 6 things. That's surprising. A mother in a kitchen can be multitasking. Okay. She can even work with the laptop on and make food. She can play with the child in the kitchen. She can make sure that she is delegating work over the phone to somebody else. Be it उनके husband को ही कि शाक भाजी लेके आना, ये करके आना, वो करने आना, but that is a kind of a work that she is doing, right?
Fourth, with that, she can plan other days also. 5, she can make children study while she's working. And Okay. 6, she can find her own happiness in the kitchen or in whatever work she does. I'm not emphasizing kitchen only because we might be having working women also. So in whatever work she does, she finds her happiness. So today's major workshop, sir, we are going to give a credit to all the mothers who manage the time Exactly. with the child and for themselves. I think for that, one round of applause need to be there. Like, hona hi For chahiye. all the mothers. For all the mothers. So you are available, but when required, let the child grow independently. बच्चा अगर आप किचन में काम कर रहे हो और बच्चा खेल रहा है और आपके ही विसर्निटी में है, आप उसको देख रहे हो, तो आपके आवाज से उससे कनेक्टेड रहो. आपको दौड़ के जाने की जरूरत नहीं है. बैलेंस करिए उस टाइम पे. डू नॉट मेक थिंग्स वहां का छोड़ के इधर दौड़े, इधर का छोड़ के फिर वापस दौड़े. नो, डोंट रश. मेक श्योर दैट यू आर काम, यू आर कंपोज्ड और आप बच्चे को भी अटेंशन दे रहे हो और अपना भी काम कर रहे हो. Sometimes you should just shout out loud. You don't need to be present. So make sure that you are available when required. And this is what is how I understand the system of balancing life. We are not available every time. Sometimes some time is for us also. So please make that thing very noted in your mind that where your voice is required, give a shout to the child from the kitchen or from the room or wherever you are sitting. But make sure you don't rush so that your work doesn't get spoiled. Am I clear, parents? First is we will list out our priorities. Second is we will make sure that we are available when it is required, not every time. The child is comfortable. The child will be comfortable. Don't worry. It is a process. It is not going to happen कि आज आपने उसको food दिया और फिर शाम को आप आए और बच्चे ने वो खाना नहीं खाया था, फिर भी बच्चा comfortable होगा. You don't need to worry. If the child would be uncomfortable, the child will cry, the child will ask, the child will throw tantrums. But make sure that you do not make yourself available for the child. कितनी मदर्स को ऐसा लगता है कि they are trying to be very soft with the child. आप बच्चे के साथ बहुत soft है, बच्चा pamper हो रहा है. Please write down in the chat box if you feel that write down me if you feel that your child is very much pampered because of you, not because of anybody else. Okay, Monica ji is very clear that she is not the one. Okay. Okay. Any other parent who feels that the child is pampered because of you as an individual? Yeah, I would say that it's me for my son, definitely. Yes, because we make ourselves very available. The moment your son calls up to you for something, you would leave everything and you would attend the call because you feel that it is important. And I understand, as parents, we should do that. But at that particular time, you can even try and tell the child that, son, give me 10 minutes. I'll wind up my work and I'll get back to you. It's not wrong. It's not wrong in telling your kids to be patient. Actually, you're developing a quality in them. And this is the way you can balance the life. Okay. So it is the quality to wait for the right time. That's the quality we are developing into the child right now, right? Yes. Whatever we are doing. Sir, if I say if my son keeps on calling me and tell Mama get a chocolate, which I get every day. ऐसा नहीं है कि मैं भूल जाती हूँ. I get for him every day. But when I'm in an important meeting and if I get a call for just a chocolate rather than emergency or any other thing, what would I feel is that it was a normal call. I could have attended it later on. So we have to learn this time matrix.
This is very important, which we are going to take ahead in this workshop. And that will help mothers and parents, even fathers, to manage everything. So two tips that we learned: one is prioritize, second is you are available when required. Okay, now we go to the third one. Growth with time management. Are you a super mom? I told you, sir, right? 6 things. Yes, ma'am. It is like a goddess Prakat with all the astra and shastra for the day to start. Sometimes this things come to fathers also. It is not just the mothers. We can do something for the dads too. But for a dad, it will be more of a telephone calls and cleaning, mopping, sometimes purchases, sometimes. So yes, growth should be there, but with time management. You cannot be available. All the three are connected. If you prioritize, you would make your child patient. If you make them patient, they will grow with time. These three things are interconnected. Do you agree, parents, on this workshop? Do you agree with these three things? Okay, if you are agree, then please write in the chat box agree. Agree or say yes, whatever you feel like, whatever short and comfortable, so that we come to know that we are in the same line and length. Yes. We are getting the answers, yes, from everyone, almost. Okay. Yeah. So that means we have to manage. And the moment we start managing, we will be able to balance. Can all the viewers of this workshop can relate this image? Maximum mothers, you would be able to relate this image, because this is a routine that we are following. We cannot, हम इस routine में से बाहर नहीं निकल सकते. So do you think all of these things are important? It's not. Some things can be kept for the later part. Some things are really important. Some things can be avoided. Some things can be done later. Right? But majority of time, it is a quite confusion that which things where it is important, which is, the urgent, and it is quite difficult to identify, ma'am. From parents to parents, it will vary. I'll tell you honestly that what day my starts is not what day your starts is. So it will vary, but there are these 4 quarters in everyone's life. Okay. It is like आपकी लाइफ में भी ये होंगे, इधर सारे जो पेरेंट्स हैं उनकी सबकी लाइफ में ये 4 क्वार्टर्स होंगे. कुछ चीजें वो अपने दिन के रूटीन से निकाल सकते हैं अगर वो निकालना चाहे तो. Definitely, I'll be very curious to learn that quadrants. We are going ahead with that, sir. Don't worry. Yes. Here we are. Time management matrix. Do you see on the screen what is it? Parents, please write yes if you can see what is there on my screen. Okay. Yes, ma'am, it is visible. It's visible, right? Yes. So this is the matrix that needs to be when you are starting with your day. So if you are having a notebook and your pen in your hand, can I have everyone drawing these 4 corners? ऐसा एक line and ऐसे कर दीजिए please. Make a 4, एक square बनाइए और फिर उस square को divide कर दीजिए. All the parents, please do that and then turn your screen so that we all can see. Yes, definitely. And yeah, if you have the workbook and you get the printout, अगर आपने workbook की printout निकाली है तो उसमें ये already है, तो आप उसको भी use कर सकते हैं. That is also fine. Okay. Yes. So, madam, I think today you gonna, हर एक का काम निकाल के उसको मतलब टाइम को कैसे मैनेज करना है वो पूरा सिखा के ही छोड़ेंगी. कर दूंगी. Prioritize, important. हर एक की प्रायोरिटी क्या होगी वो आप आइडेंटिफाई करके ही छोड़ेंगी. Okay, wonderful. Yes. Okay, everybody is ready. Can I have a thumbs up or a yes from your end, please, so that we can start?
Yeah. Okay, fine. So as we begin, we have urgent, urgent, not urgent. Then we have important and not important in the corners. Why? Because if it is urgent, it is important, right? Simple. And if it is not urgent, it is not important. ऐसा कभी होता है लाइफ में? Does it happen? For us, everything is urgent and important only. Okay, tell me, mothers, breakfast is important or not important? Right? N-I if it is not important, right? I if it is important. Breakfast. Okay, are we getting the replies? Yes, we are getting the reply. Nikita ji, Rosaline ji, Premjot ji, everyone says it is important. Cooking is urgent or not urgent? Yeah, I believe it depends on the time. At what time of the day you are asking this question. Okay, so that means we can schedule this. Cooking we can schedule. 5 बजे बना लेंगे, सुबह 11 बजे बना लेंगे. We can schedule. Right. Right? Okay. Yes. Tell me, playing with the child is urgent or not important? Please write down. Urgent, you, not important, NI. Playing with the child. Am I getting the answers? Yes, 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 ma'am. Many of the parents says you, it's urgent. Okay. Okay. And Nitya ji says depends. It depends. Okay. Okay. Now a very important question for the mothers. Shopping is urgent or not urgent? Important or not important? Okay. Not important, not important. Okay. Yes. Not So important. we all know the priority, right? So let's do one thing. In urgent over here, urgent and not urgent. Have you written? Have every father written that urgent and not urgent? Okay. So what we do is urgent can be playing with the child, right? Playing with the child. And not urgent is shopping. Out of this, what can we delete? Shopping, right? Shopping can be deleted. So basically, we know what is the content of balancing life. Okay, can we delete cooking? No. No, definitely no. Can we delete work? Can we delete taking breath? Can we delegate? आप मेरे बदले सांस ले लो. ऐसा हम delegate कर सकते हैं? No. No, right? So that means certain things are really in ourselves. We don't need to delegate those things. We don't need to remove those things from our mind. They are feed over here. Getting up in the morning, doing household work, getting ready for work, बच्चे को ready करना, those all things are feed, and that is urgent and important. Are you getting, parents? Please write yes if you are getting it. We understand what is urgent and what is important. Okay. We are getting the answers. People says yes. Okay. Movie, shopping, other things that are done for our relaxation are not urgent but important. We all need break. All of the mothers need break. Sitting and having a cup of tea all alone is not urgent but important. Conducting such a workshop and being a part of it, it is scheduled. We can schedule this, but it is important. And that is what we did. We scheduled it for you on 20 May.
at your time that was being preferred 3 to 5, and it was important, so you are a part of it, right? So this is how we make the time management metrics. Why? Because there are certain things that we have to delete from our life. But what are they? We cannot identify. Can we delete our work? No. Can we delete the time spent with our children? No. Can we delete brushing, getting ready, going to work, cooking food? Can we delete all this? No. So that means those things will come in urgent, not urgent, and important. That's it. Right? Right, mothers, parents, are you with me? If it is correct, please write yes. And if you feel that there are some questions coming in your mind, stay, put it in your mind, write it down. We will answer it at the end of the workshop. Yes. Akanksha ji says yes. Nitya ji says yes. Okay, wonderful. Okay, moving to next. See, this is what I was telling, and that is what we have as in plan. Activities, breakfast, going for a movie, parent-teacher meeting, conference, house cleaning, lunch, dinner, going to salon, going for shopping, doing activity, going to drop the child. Now, we have this matrix. What we have to do is, we have to put all these activities in this. Okay, so I would like to add over here, ma'am, if you Yes. allow me. Okay. Yes, sir. So in the WhatsApp group, हमने सारे मतलब जो parents हैं उसको बोला था कि you make a list of the routine thing you are doing. आपने जो activity मतलब आप जो भी activities करते हो day in day out, जो कुछ भी याद आए, okay. I'm sorry. So उन सारी activities का list बनाइए and share with us, okay. So here what we can do is right now, जिन parents ने वो activities का list बनाया है, you just have it right in front of you. और जिन लोगों ने नहीं बनाया है उनको हम सजेस्ट करेंगे कि वो अभी एक एक्टिविटी का पूरा लिस्ट बना लें, रूटीन में उसका जो कुछ भी चल रहा है. डेफिनेटली वी ऑल अंडरस्टैंड दैट एवरीबॉडी हैज डिफरेंट काइंड ऑफ शेड्यूल एंड ऑल दिस थिंग्स, और कभी कभी ऐसा होता है कि भाई अर्जेंट काम आ जाता है, हम वी हैव नॉट शेड्यूल एंड समथिंग लाइक दैट. बट या उन सबको हम एटलीस्ट आइडेंटिफाई कर सकते हैं इस 4 क्वाड्रेंट के हिसाब से, वेदर इट इज इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट, वेदर इट इज नॉट इंपॉर्टेंट एंड अर्जेंट, वेदर इट इज not urgent and important, and not urgent and not important, right? So उसके हिसाब से हम categorize कर सकते हैं. So I would request everyone to make a list right now. Okay? Even I am doing it, sir, and even you do that. Yeah, definitely. And we will be playing music for around few minutes or something. Okay? Is it fine? Every parent, is it fine? 2 minutes आपके लिए okay है list बनाने के लिए, or you need more time? Please write into the chat box. I guess 2 minutes is enough because mother के दिमाग में तो उनका पूरा schedule ही होता है. Okay, wonderful. अभी 5 बजे वर्कशॉप खत्म होगा तो उनके दिमाग में ये चल रहा होगा कि शाम को वो क्या करेंगी. Okay. So, this is how we actually bifurcate. हमने अभी ये वर्कशॉप को इम्पोर्टेंस दिया है. शायद उस टाइम पे उनका कुछ भी काम होगा तो उन्होंने उस काम को इम्पोर्टेंस नहीं दिया है. So this is what parents we understand as a time management matrix. It is very important. Professionally भी ये चीजें आपके बहुत काम आएगी, पर्सनली भी ये चीजें आपके बहुत काम आती है. बच्चे के साथ ये टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स आपके रूटीन को स्केड्यूल करता है, आपकी लाइफ बैलेंस करता है. मैं कभी भी ये टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स मैं ऐसा ही सोचती थी, दिस इज इम्पोर्टेंट, दिस इज इम्पोर्टेंट, दिस इज इम्पोर्टेंट. Then I realized that I have stopped giving time to myself, and then I started prioritizing things, important and not important. तब मैं ये urgent और not urgent का भी नहीं समझती थी. So please parents, figure out your routine. Write down it as in urgent, not urgent, important and not important. So you do one thing, you just make a list. Okay, एक बार list बनाने के बाद उसको हम categorize करेंगे. So just take your time.
okay, and make a list of activities, list of tasks you do daily basis, on daily basis, चाहे वो मतलब किसी भी तरह का काम हो, वो आपके खुद के लिए हो या फिर बच्चे के लिए हो, even you know for the family or anything, okay, just list, everyone list बनाइए कि आप क्या क्या काम डेली रूटीन में करते हैं, एंड उसके बाद हम बताते हैं कि उसको किस तरह से आपको कैटेगराइज करना है, किस तरह से क्या करना है, राइट मैम? Yes. Okay, Done. and yeah, ma'am, if you can share the music, then it is fine because I am not a host now. No? I'll Oh. make, so just give me one. Okay, yeah, please. Okay, I believe I am the host now. Okay, wonderful. Let me share my screen. So everyone, just 2 minutes time. Take your time and make a list, wonderful list, okay, about your work. आप क्या करते हैं हर एक दिन? Just make your list. मेरी दुनिया मेरी दुनिया मेरी दुनिया तू ही रे, मेरी खुशियाँ मेरी खुशियाँ मेरी खुशियाँ तू ही रे। मेरी दुनिया मेरी दुनिया मेरी दुनिया तू ही रे, मेरी खुशियाँ मेरी खुशियाँ मेरी खुशियाँ तू ही रे। रात दिन तेरे लिए सजदे करूं, दुआएं मांगू रे, मैं यहाँ अपने लिए रब से तेरी बनाए मांगू रे।
Okay, I believe we are back and everybody is back. Can everybody listen to me? आपको मेरी आवाज आ रही है? Yes, sir, you're audible. Okay, wonderful, wonderful. So, guys, please tell me whether you get this, a list or not. आपको ये list बन चुका कि नहीं आपका? Yes, everyone, please write it in the chat box. Do you get the list or not? Yes or no? Yes or no? Yes or no? Okay, wonderful. I'm getting the answer from Nitya ji and others also. Wonderful. Great. Great, 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 great. Now, what you need to do is, just a minute. Okay. What we need to do is, we have already made this list of the task, right? आप दिन में क्या करेंगे, किस तरह से करेंगे, जनरली आप किस तरह से करते हैं, वो आपने एक पूरा लिस्ट बना दिया है. Now, we need to categorize this into 3 different bucket. Okay. Generally, पेरेंट्स को ये 3 कैटेगरीज का काम उसके लाइफ में होता है, राइट? ओके. The first is family or job. Okay, if you are doing a job, then definitely job is the priority. But if you are not doing the job, the first job is your family. Am I right, ma'am? Okay. Yeah. Absolutely, sir. Yes. Okay. So आपके कुछ ऐसे काम होंगे कि जो आप फैमिली के लिए या फिर जॉब के लिए करते हैं, तो उसको आप उसके सामने जो भी आपने लिस्ट बनाया उसके सामने आप लिख दीजिए FJ, मतलब फैमिली या जॉब. ओके, वॉट एवर योर वर्क इज, आप उसको लिख दीजिए. ओके. नाउ से फॉर एग्जांपल फॉर मी it might be like early in the morning I'm getting ready for the day. मैं अपने कितनी मीटिंग्स है उसको मैं लिस्ट बनाता हूँ, उसका मतलब मैं शेड्यूल बनाता हूँ, राइट? सो वो जो है वो मेरा फैमिली या फिर जॉब में वो उस बकेट में आएगा, राइट? द सेम वे देयर इज अनदर बकेट विच इज स्पेसिफिकली फॉर चाइल्ड, जो आपको करना है बच्चों के लिए. नाउ यू मे गेट चाइल्ड रेडी फॉर स्कूल, या फिर आप चाइल्ड के लिए स्पेसिफिकली कोई उसको लर्निंग मिले, उसका ऐसा कुछ कर रहे हैं. ओके. एंड या सो उस तरह की जो भी आपके लिस्ट है उसको उसके सामने आपको लिखना है C. ओके. और तीसरी जो कैटेगरी है दैट इज फॉर सेल्फ. ओके. सो आपको ये आइडेंटिफाई करना है कि आप खुद के लिए क्या क्या काम करते हैं. ओके. अच्छा, अगर आप ब्रश कर रहे हैं तो वो खुद के लिए ऐसा नहीं. दिस इज नॉट द मीन व्हाट वी मीन. ओके. आप मतलब खाना बना रहे, खाना खा रहे हैं तो वो खुद के लिए वो काम की हम बात नहीं कर रहे हैं. ओके. वी आर स्पेसिफिकली टॉकिंग अबाउट the work you do for yourself to pamper yourself. Okay, आपको अपनी लाइफ में आपका इंपॉर्टेंस हो उसके लिए. Yes, Sachi ma'am, would you like to share something about Yes. that? So when we talk about this 3 bucket, ये 3 bucket life के 3 important child and self. Just a minute, ma'am. Yeah. Okay. Yeah. So Once again, you need to repeat, ma'am. Okay, these 3 buckets are the most important thing in your life. This has family, this has job, this has child, and this has your own self. जब हमने आपके साथ टिप शेयर किया था, उसी में हमने बोला था learn to prioritize, and उसके बाद हमने बोला था you are available when required. तो जब you are not available, तो आप self के लिए टाइम निकालते हो. When you are dropping the child to the school और घर आके आप आराम से बैठ के एक बुक रीड कर रहे हो, वो सेल्फ हुआ. जब आप अपने लिए कुछ क्रिएटिविटी कर रहे हैं, मे बी कुछ मदर्स इधर अच्छा सा आर्ट कर सकती है, या कुछ मदर्स कुकिंग अच्छा करती है, या कुछ मदर्स ऐसी है जो अच्छे से अपने आप को ओरेट कर सकती है, बोल सकती है. दे कैन बी वर्किंग वुमेन्स बट दे डू समथिंग फॉर देयर ओन सेल्फ, तो वो सेल्फ में आएगा. चाइल्ड के लिए तो आपका बकेट पूरा भर जाएगा, आई एम डैम श्योर, बिकॉज हमारा रिवॉल्यूशन बच्चे के आगे पीछे ही होता है. सो दैट इज वन थिंग. फैमिली, so you are yes. Yeah, I'm more into interested to see the list of things they are doing for themselves. That is okay. very less, sir, because we have forgotten, after having a child, we have forgotten to live for ourselves. Do the mothers or parents over here agree that we have stopped living for ourselves? Please write in the chat box yes if you agree with me that you have stopped giving time to yourself. कितनी मदर्स ऐसी है जो
जिन्होंने डांस किया होगा लास्ट वीक अपने लिए क्योंकि उनको डांस पसंद है, वो वॉकिंग करने के लिए गई होगी क्योंकि उनको नेचर पसंद है. ऐसी कितनी मदर्स है या पेरेंट्स. सर इवन यू, have you done anything that you like? Honestly speaking, ma'am, I have specifically, given a time early in the morning, because the whole day I am not able to, give the time. But early in the morning, I do spend time with myself. Okay, and that is very important. That's why I want to see that how many mothers are spending time with themselves, right? That's perfectly great. And it is very important. हम जो पूरे दिन में एनर्जी यूटिलाइज करते हैं, वो रात में वो मीटर भी देखना पड़ेगा ना कितना काम हुआ है. So Yes. the most important thing is getting ourselves into ourselves. हमें अपने अंदर जो एनर्जी है उसे हम अपने लिए कैसे यूटिलाइज कर सकते हैं. कितनी मदर्स के पैर में व्हील है? हाउ मेनी ऑफ द मदर्स, आप में भी सर, आपके फादर में भी, आपके पैरों में व्हील्स है? No. How can you run so much fast? Yeah. The life that we are seeing around needs to be balanced. And for balancing, we do not need wheels, we need brake. So we will give brake to ourselves. We will give brake for ourselves. We will give brake to ourselves, and we will make sure कि हम वो ब्रेक ये बकेट फिल करने में यूज करें. ग्रीन कलर बकेट. So mothers, parents present over here, please write green. If you are ready to give time to yourself, write in the chat box GREEN, green. Hey. Yes, the color of prosperity. Nature. Color of nature. Yes. Okay. Bright color. Yes, wonderful. So I believe. And sir, do you see the colors of the bucket? Orange, sacrifice. Family job, sacrifice. Yellow is bright as sun. That is why it is for the child. Yes. And green is for prosperity. Self कभी होती नहीं है. So, Great. yes. Thank you, parents, for being very cooperative when it comes to typing. Thank you for making a priority this workshop as urgent and important. So, thank you. And moving ahead, I would just like to ask, क्या आपने जो ये शीट बनाई अपनी एक्टिविटीज की, क्या उसमें आपने आपकी खुद के लिए कुछ ऐड किया है? Have you added anything for yourself? If you have, pick the numbers and write in the chat box 3, 4 कितना है आपका खुद का. Please write it down. Sir, if you have also done, please write. Even I have done. So I'm starting. I have added 2 things for myself. Any other parents? 1 thing. Great. 3. Very good. So how many you have? Any other parent? 2. Okay. Okay, now let's go to another section, child. Please count and write how many things you have added for the child. For me, it's 7. Any other parent? Please write down. Okay. Okay. सर जिनके 5 से ज्यादा होंगे ना, उनके बच्चे श्योर टॉडलर्स है. Because they need more of the task. Exactly. Yes. If I'm wrong, आपके बच्चे के एज ग्रुप्स के हिसाब से ही आपका टास्क बकेट डिवाइड होगा. If the child is 10 years above, the mother or the parent will be more into family/job. Because the child will take a lesser activity. The child goes to school, the child comes back, goes to the tuitions, does the work by him or herself. बच्चा अगर toddler होगा ना, between 1 to 3 or 1 to 4, parents' energy is utilized more in the child. Yes. Can we go to the orange? Family job. Mine comes to 8.
fix it. Great. So that means this is more of an active working parents. That can be in the house also. Anyone more than 5 in family and job is more of an active parent. Now can you categorize? आपको टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स पता चल गया? हमने ये क्यों किया आपके साथ? So that you understand that out of the 4 quarters, जब आपकी 3 बास्केट होती है और उसमें से सेल्फ के लिए टाइम नहीं होता, that means you cannot delete every work given to you. Start deleting some of the things, please. It is required. This workshop is balancing life, and life consists of health, wealth, and prosperity. So if you're having health and prosperity, you will be having wealth, right? If you're having just wealth and not health and anything, no work of that wealth. Only prosperity, koi kaam ki nahi. Only health, koi kaam ki nahi. All these 3 things are important. But for that, you are important. So can we have a picture of all the viewers, sir? One more picture wherein they do this. We are important. Definitely. Yes, can we all turn on our cameras and have this and we can have a beautiful picture of all the participants. Please do the needful. Yes. So I'll take Wonderful. Thank you, Pooja ji. Thank you, Akanksha ji. Yes. Thank you. Thank you very much. Right next to your eyes, because if you see, you will get the knowledge about it. Wonderful, guys. Wonderful. Thank you. Thank you. Team, screenshot ले लिया है. Okay, wonderful. Okay, great. So are you getting the value? मतलब आपको लग रहा है कि नहीं, it is really important to understand all these things, right or wrong? It is. Yes. Please write in the chat box. I remember, sir, when I started this journey, I was not knowing where am I going to reach. And with a child, with family and everything, I forgot to balance the life. Then in one of the research-based studies, it says that balancing life is more about balancing time. And that is what I have learned. Wonderful. Great. So, yeah, up till now हमने जो किया उसमें आप लोगों ने सबसे पहले एक लिस्ट बनाया है आपके टास्क का, डेली रूटीन का. सेकंड इज यू हैव कैटेगराइज. हमने अच्छी तरह से समझा कि उसको कैटेगराइज कैसे करनी है, राइट? ओके. एंड वी आल्सो अंडरस्टैंड द 3 टिप्स किस तरह से जाना है. नाउ what we want you to do is we want to understand, okay, there are 4 metrics, right? Okay, the very first one is quadrant 1, where we do that, the urgent and very important. मतलब उसको हम किसी भी तरह से उसको हम डिलीट नहीं कर सकते, उसको हम डिले नहीं कर सकते. ओके, राइट नाउ वी नीड टू डू इट. अगर हम नहीं करेंगे, जैसे कि अभी हमारे पास एक अर्जेंट और इम्पोर्टेंट काम अभी कल ही डिक्लेयर हुआ है, दैट इज 2000 के नोट बंद होने वाला है, right? So we do have the time till September, but if it is right now, मतलब वो एक वीक के अंदर ही करना होता, तो it is urgent and important. Okay, we need to do it right now. Okay, so that kind of task, आपके जैसे भी इतने टास्क है, okay, जो urgent और important है, what you need to do is you need to identify and उसके सामने लिखना है Q1, which you need to do it anyhow. And I'm damn sure कि बहुत सारे ऐसे टास्क होंगे, बिकॉज वी हैव नेवर डन दिस एक्टिविटी. तो बहुत सारे ऐसे टास्क होंगे जो हमें हमेशा यही लग रहा होगा कि इट इज अर्जेंट एंड इम्पोर्टेंट, वी कैन नॉट अवॉइड इट. मतलब उसको अवॉइड करना पॉसिबल ही नहीं है, राइट मैम? यस. Yes, there are certain tasks in our life which we cannot, just avoid it. How many of you first time mothers कितने हैं? जैसे मैं हूँ. Please write down if you are first time mother. If you don't have sibling नहीं है, one time, first time. Yes, Chetna ji says me.
ये डू दिस वाला फंडा सर अभी समझ में आ रहा है. Urgent and important. Exactly. It is. It Yes. is. We forget the importance of that particular work. We keep it aside and then it piles up. वो बढ़ जाता, वो नहीं करना है. जैसे कुछ पेरेंट्स का प्रोसेस होता होगा, वो सुबह उठते होंगे, पूरा रूम क्लीन कर देते हैं, ये वो. फॉर देम दैट इज अर्जेंट. फॉर मी दैट आई फील पूरा दिन है, कभी भी साफ कर दो. यू नो, दैट इज हाउ माय थिंकिंग गोज. फॉर देम दैट. सो हर एक इंडिविजुअल के लिए टाइम मैट्रिक्स अलग अलग जाएगा. ओके, सो बी इट इफ यू आर अ वर्किंग पेरेंट, आपके लिए टाइम मैनेजमेंट मैट्रिक्स अलग होगा. So what you can do is with this, आपने जो एक्टिविटीज लिस्ट डाउन किया है उसको आप कैटेगराइज करिए. डू दिस, अर्जेंट, इम्पोर्टेंट. उसमें ऐसी एक्टिविटीज भी होंगी अर्जेंट एंड नॉट इम्पोर्टेंट. Yes. Okay. So right now we just got the example of it. Nitya ji just messaged us that sorry sir, I couldn't attend further. I had some important work. So it is urgent and important right now. Okay, for her. True. And certain times means like for me, I'm a workaholic mother. So for me, my work becomes important, and my child, giving that particular attention to my child, I feel he can play alone. I can give him the phone. Why he's constantly bothering? ये feeling भी आती होगी parents को. But at that point of time, try and prioritize. Sometimes it's not necessary to work at 10 in the night or 11 in the night. At that point of time, you can work with your child. You can play with your child. You can create that bond. Because your working hours are 10 to 7, do not bring work at home. Spend the child. So that point of time, you can manage this time management matrix. I understood it very late. And what happened with that incident is that the right time the work did not get over. And that is why we explain the parents this. The reason to conduct this workshop was many parents, many questions. How to manage work and the child. Ma'am, when I come back home, the house is really dirty. I cannot, I'm tired. How to manage that? Work with the child. Tell your child, chalo, let's find out. Let's clean. Delegate. You tell somebody else to do it. Make sure that you have the authority, because you are the one who has to take out time for yourself also. Exactly. Yeah. Okay. So with this, the second thing is we do have the sum of the task कि जो आपके लिए urgent नहीं होंगे but वो important होंगे. Say for example, if I say that आपके जो bills हमें आते हैं, okay, हमें एक इलेक्ट्रिसिटी बिल्स वगैरह हमें जो पे करने रहते हैं, ओके, इट इज नॉट अर्जेंट, मतलब अभी के अभी नहीं करना है, आज बिल आया आज के आज वो नहीं करना है, बट इट इज इंपॉर्टेंट. अगर वो नहीं करेंगे तो घर में लाइट नहीं रहेगी, राइट? सिमिलरली फॉर मदर्स ऑल्सो there could be some things like as we just discussed that some of the task is not urgent, like हम बात कर रहे हैं, हम दो लोग बात कर रहे हैं, mother and father, and the child is coming to you and mama I want this, mama I want this. It might be not urgent, okay, but it is important to communicate with the child, right? Okay, it is really important, okay. So उसको हमें avoid नहीं करना है, but yes, we need to schedule it. All such kind of work we need to schedule कि हम इसको इस टाइम पे करेंगे. We can plan that in the evening, like I have planned that in the evening I'll play with my child, and nowadays my child is really fond of chess. So every day when I go to home, okay, after dinner, me and my child, we sit together and we play the chess, and I learn him, I teach him how to play the chess. Okay, so it is in the quadrant 2. So I believe it is really very important for all of us to identify कि हमारे ऐसे टास्क कौन से हैं आपकी डेली रूटीन में जो अर्जेंट नहीं होते. हमने उसको बना रखा होता है अर्जेंट, ओके, वो अर्जेंट नहीं होते. इट इज नॉट अर्जेंट, बट यस इट इज वेरी इंपॉर्टेंट. ओके, सो ऑल दिस टास्क आपने जो लिस्ट बनाई है उसमें ऐसे जितने भी टास्क है उसके सामने आपको लिखना है Q2 क्वार्टर 2,
ओके, क्वाड्रेंट 2 जिसके अंदर ये टास्क आपके आते हैं. सो अगेन आई एम आस्किंग यू ऑल टू आइडेंटिफाई. और अगर आपको ऐसा कोई भी टास्क है जिसमें आपको समझ में नहीं आ रहा है कि वेदर इट इज फॉलोइंग इनटू द Q1 or Q2 or Q3 or Q4, then you can ask. Okay. Sir, I would like to add one more thing. Um, when the child is being dropped to the school in the morning or afternoon, पिकअप टाइम उसका जो होता है, बच्चे का पिकअप टाइम, वो तो हमें पता होता है, राइट? सो इट इज शेड्यूल. Exactly. It is not urgent. The time is scheduled, but it is important. Exactly. So if the child is getting done from the school at 12 o'clock, the mother is not going to reach at 11, right? So in that gap, जब बच्चे को छोड़ा है और जो बच्चे का पिकअप टाइम है, mother can prioritize urgent, not urgent. Exactly. And then we can take important and not important because schedule already हो गया है. Wonderful. Great. So parents, have you done this activity? आपने अपने जो टास्क है उसमें आपको समझ में आ गया है Q2 में किस तरह से टास्क आएंगे? Are you getting it? या फिर आपको कोई confusion है? Please, if you want to ask, you can also unmute and ask us. Okay. Otherwise, you can write into the chat box that it makes sense. MS. Write into the chat box MS makes sense. अगर आपको समझ में आ रहा है. Okay. Yes. Can I get some answers from you? Wonderful. Monica ji says makes sense. Wonderful. Okay. So I hope that this quadrant is clear and you have identified all the tasks कि जिसको आप schedule कर सकते हैं. It is not urgent, but it is important. Yes, Premjot ji says makes sense. Wonderful. Okay. With this, we have the third quadrant, which is urgent and not important. Okay. मतलब इतना important नहीं है, but उसको करना urgent है. Okay. So how do I say? Any kind of task which could be automated. Okay. Say for example, any kind of bills you are paying. Okay. और उसकी last date है, या फिर credit card bills. Okay. Credit card bills which is urgent, मतलब वो जब आता है उस डेट को मिस नहीं करना है. Okay. बट वो करना इतना important नहीं है. So please understand there is a difference. Okay. Urgency और importancy में दोनों में difference है. Okay. Now any such kind of task which you can delegate to someone else, which you can automate with the use of technology or with the use of any person, any helper, anyone from the family member. Okay. This kind of task falls into quadrant 3. Okay. जिसको आप delegate कर सकते हैं. So from your list, identify all the tasks which you can delegate. मतलब अगर आपको ये समझ में नहीं आ रहा है कि whether it is urgent or important, urgent and not important or not, अगर ये भी समझ में नहीं आ रहा है तो सिर्फ आप ये identify करना शुरू करें कि आपके ये जो list आपने बनाया है उसमें से कौन कौन से ऐसे काम हैं जो मैं किसी और को delegate कर सकती हूँ या कर सकता हूँ. जैसे कि my wife, she is very intelligent. Okay. And definitely हर एक वाइफ इंटेलिजेंट होती है. बट शी हैज आइडेंटिफाइड कि जब मैं ऑफिस जा रहा हूं तब मैं अपने सन को स्कूल पे छोड़ सकता हूं. ओके. और जब मैं ऑफिस से लंच के लिए आ रहा हूं तब मैं स्कूल से अपने बच्चे को पिकअप कर सकता हूं. सो दिस इज द वर्क शी डेलीगेटेड टू मी. ओके. तो अर्जेंट है, मतलब इसको नहीं कर सकते, एंड नॉट इम्पोर्टेंट. ओके. उसके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं है. सो वट एवर टास्क यू कैन डेलीगेट. ओके. ऑल दिस टास्क. Yes, wonderful. AC service, Monica ji ने बताया AC service. All such kind of tasks are in the quadrant 3. So मैं ये चाहूंगा कि आप लोग आइडेंटिफाई करें कौन से टास्क आप डेलीगेट कर सकती है, ऑटोमेट कर सकती है विद द यूज ऑफ टेक्नोलॉजी और फैमिली मेंबर्स और एनी काइंड ऑफ पर्सन. यस, एग्जैक्टली. क्लीनिंग एंड कुकिंग, दिस काइंड ऑफ टास्क यू कैन ऑटोमेट इट. ओके. आप मेड को बुला सकती हैं और मेड उसमें आपको हेल्प करेगी, मतलब वो काम करके आपको देगी. सो कहने का मतलब ऐसे टास्क जो आप डेलीगेट कर सकती है, दिस फॉल्स इनटू द क्वाड्रेंट 3. ओके. कई मदर्स को ये होता है, इनफैक्ट माय मदर हैज दिस पर्टिकुलर थिंग कि मेड कितना भी काम करके जाए, मतलब कैसा भी काम करके जाए, कितना भी अच्छा, फिर भी वो काम करेगी. मतलब वो एक बार वो सफाई हो गई, झाड़ू कटका हो गया, फिर भी वो दूसरी बार झाड़ू कटका लगेगा. राइट. नाउ दिस इज समथिंग वी नीड टू आइडेंटिफाई कि इसको हमें
डेलीगेट कर चुके हैं तो उसके बाद करने की जरूरत नहीं है. ओके ओके, इट इज अननेसेसरी रीवर्क, इट इज कंज्यूमिंग योर टाइम. और ये टाइम वो टाइम है जो आप अपने सेल्फ के लिए या तो फिर अपने बच्चे के लिए निकाल सकती है, बट आप यहाँ पे आप उसको आप ऐसे ही मतलब यहाँ पे आप उस टाइम को यूज कर रहे हैं. मैं ये नहीं बोलूंगा कि वेस्ट कर रही है, बट यस आप इसको अननेसेसरी यूज कर रहे हैं. ओके, एंड टाइम इज द लिमिटेड रिसोर्स. वो सबके पास मतलब अबंडेंस में नहीं होता है. सो यू नीड टू प्रायोरिटाइज, यू नीड टू आइडेंटिफाई कि कौन से काम आप डेलीगेट कर सकते हैं. आइडेंटिफाई एंड राइट द Q3 अगेंस्ट दैट टास्क. ओके, सो इज इट डन एवरीबडी? आपने आइडेंटिफाई कर लिए कौन कौन से टास्क Q3 में आएंगे और जो आप डेलीगेट कर सकते हैं. आई ऑल्सो वुड सजेस्ट कि अगर आप वर्कबुक यूज कर रहे हैं तो वर्कबुक में हमने ये भी दिया है कि वो टास्क हम किसको डेलीगेट करेंगे. ओके, सो यू कैन ऑल्सो राइट डाउन कि भाई ये काम हम किसको डेलीगेट करेंगे. से फॉर एग्जाम्पल अगर आप जैसे बताया कि भाई क्लीनिंग का काम है तो आप किसको डेलीगेट करेंगे, तो हम डेलीगेट करेंगे मेड को, राइट. अगर आपको बच्चे को पिकअप एंड ड्रॉप करने का काम है तो किसको डेलीगेट करेंगे. से फॉर एग्जाम्पल स्कूल वैन वाला जो है, ही माइट बी द पर्सन. ओके, तो वो आपको लिखना है. ओके, यस सची मैम, वुड यू लाइक टू ऐड एनीथिंग, वुड यू लाइक टू गिव सम एग्जांपल्स? सर डेलीगेट दिस का आज सुबह का ही एग्जांपल है. माय मदर शी गेव मी अ स्मॉल वर्क टू डू which I forgot because I was on the phone call. So she delegated to me. It was, for her it was urgent and important, but for me it was urgent and not important. It depends, right? It's the thought process that we all follow. But then I realized it, that the reason why she delegated it to me was she thought that I'll be able to do it. And if she had to do it, for her it was urgent and important anyways. So we have to understand the work given, उसका gravity कितना है, वो कोई और completely कर सकता है कि नहीं कर सकता है. अगर वो भी काम आधा छोड़ के ही वो कर जाएगा तो for us it will be do this only. फिर तो वो quarter 1 में जाएगा. Exactly. So always parents, please remember, whenever you are delegating, it is urgent for you and important for you. But when it is delegated, it is urgent and not important. So keep the situation that way. Do not give something that cannot be delegated. Give something that is delegated. Like when you are giving the household some things, make sure that you have delegated that thing because for you it was urgent and not important. Okay. So this is what parents, are you understanding? Do this important and not important, delegate the activity. I hope that you are getting what we are going to set in the time management matrix. Okay, can I get answers from you people in the chat box? आपको समझ में आ रहा है, आपने ये आइडेंटिफाई कर लिया है, कैटेगराइज कर लिया है अपनी Q1, Q2, Q3 एक्टिविटीज को? Yes, mothers, please answer me. Yes, PGN says yes. Wonderful. Yeah, I would like to see more messages from the parents. And yeah, this is a workshop. आपके लिए specifically डिजाइन किया गया है. If you go into the internet, let me tell you very frankly, if you go into the internet, if you go anywhere, okay, any kind of workshop, any kind of parenting thing, parenting webinar, आपको ये चीजें नहीं मिलेगी. ये स्पेसिफिकली हमने आपके लिए डिजाइन की है. वी वेर सरप्राइज कि भाई ये सारी चीजें पेरेंट्स क्यों यूज नहीं करते हैं, ऐसे टूल्स जो है वो क्यों यूज नहीं करते हैं. एंड वी हैव डिजाइन सच अ वंडरफुल वर्कशॉप फॉर यू. एक्टिविटी हमने डिजाइन की कि जो आप कर पाए. ओके, so for that, if you feel that it is good and you are getting a value, then please interact with us. Okay, so we would feel energized, we would feel yes, we are doing a great job. Okay, so with this I would like to come to someone raised the hand, I believe. Sir, I would like to add one more thing is, please. Whenever such workshops happen, there are certain workshops which come up with only time management workshops. When we are bringing time management with child development, that means we are giving parents an approach to think about how these things can work. Exactly. And as parents, you are doing the best thing. Trust me, managing work, family, and child. These three things, you are managing it wonderfully. But today's workshop is more about giving time for yourself.
So try and work on this quarter 3. Delegate this. Try and work on it, because rest all the 2 quarters you are working wonderful. And this quarter is important for you because you have to fill the green bucket for self. जो मेरे में तो 2 थी, बहुत सारे ऐसे पेरेंट्स हैं जिनमें सिर्फ 2, 1 या 3, हार्डली हम 3 चीजें सेल्फ के लिए करते हैं. एंड उसमें भी मैं जानती हूँ आपके में वर्क होगा, वर्क को आपने सेल्फ में लिख दिया होगा बिकॉज यू आर डूइंग इट फॉर योरसेल्फ. So make sure that you understand, you delegate these things to others, make it urgent and not important, then only it will be delegated. If it is urgent and important, it will come in quarter 1, do this. And these 4 quarters are specially designed for you. Why? Because we have forgotten to give time for ourselves. We have forgot to balance life for ourselves. All these things we are doing is for children or for family. But if you are 100%, you can do all these things double the speed. Yeah. So mothers, can I have a smiley in the chat box so that I understand that you're happy when it comes to doing for yourself? A small emoji that says smiley. Right here. Here I put mine. Okay. Yeah. Here I put mine. Sachi ma'am, you are actually directly sending it to me. It is a direct message, so you can send it to everyone. Yeah. I'm sorry. Okay. Okay. Wonderful, Monica ji. Thank you very much for your reaction, your feedback. Okay, great. So with this, we come to the last, that is quadrant 4, and that is not urgent and not important. So I am damn sure कि अगर हमने जो एक्टिविटी आपको अभी करवाई और सारा लिस्ट बनवाया, उसमें आपने क्वाड्रेंट 1 में क्या है, क्वाड्रेंट 1 में क्या है वो आपने आइडेंटिफाई कर लिया, क्वाड्रेंट 2 में क्या है जिसको आप शेड्यूल करेंगे वो आपने आइडेंटिफाई कर लिया, और क्वाड्रेंट 3 में जो भी चीजें आप डेलीगेट कर सकती है वो भी आपने आइडेंटिफाई कर लिया. देन रेस्ट ऑफ द थिंग्स जो बची हुई है, ओके, वेदर यू बिलीव इट और नॉट, आप उसको आपको लगेगा बट सही में वो सारी की सारी चीजें ऐसी चीज है जो नॉट अर्जेंट है एंड नॉट इम्पोर्टेंट है, और हम खाली फोकट में इस पे अपना टाइम जो है वो वेस्ट करते हैं. हमारा टाइम जो है वो यहाँ पे पार्क हो जाता है और हम उस टाइम को यूटिलाइज नहीं कर पाते. ओके, सो ऑल द थिंग्स विच इज नॉट अर्जेंट एंड नॉट इम्पोर्टेंट, आपको क्या लगता है उसका क्या होना चाहिए? या all the things which is not urgent and not important, what should we do, ma'am? Delete. Exactly. So ऐसा कोई भी काम, yes. Delete. So ऐसा कोई भी काम जो हम दूसरों को अच्छा लगाने के लिए करते हैं, स्पेसिफिकली, ओके, फ्रॉम द पॉइंट ऑफ व्यू ऑफ इंडियन फैमिलीज एंड इंडियन मेंटालिटीज, आई वुड सजेस्ट ऐसा कोई भी काम तो जिससे हम दूसरों को अच्छा लगाने के लिए करते हैं, ओके, वो शायद तक हो सकता है कि भाई किसी ऐसे ऐसे रिलेटिव या फिर ऐसे कोई लोग है हमारे पहचान में कि जिसके वहां पे हमें बैठने के लिए, उसको मिलने के लिए, उसको ग्रीट करने के लिए जाना पड़ेगा. सो ऐसा कोई भी काम है जिसमें ऐसा आता है कि करना पड़ेगा, ओके, all this work are not urgent and not important for you. So open your list and identify all these tasks. I totally understand कि sometimes we feel like कि यार मतलब वो क्या सोचेंगे, okay, या फिर हम इसको नहीं करेंगे तो क्या होगा, but believe me, nothing will happen, okay, nothing will happen. Even people don't have time, okay, people don't have time to think about others, okay. We feel that what they will be feeling, what they will be thinking about us and all these things, but people really the only people you care about मतलब वो आपके साथ ही है, और उसके सारे काम क्वाड्रेंट 1 में, क्वाड्रेंट 2 में और क्वाड्रेंट 3 में ऑलरेडी आप उसको कैटेगराइज कर चुके हैं, ओके. सो ऑल द वर्क which is not urgent and not important, that you need to identify. उसके सामने आपको लिखना है Q4, and then you need to identify how you can delete it, okay. आप उसको कैसे डिलीट कर सकते हो उस काम को, भले ही सडनली आप डिलीट नहीं कर सकते, बट ग्रेजुअली यू कैन delete it,
over the period of time. Say for example, कोई एक काम है जो आपके लिए अर्जेंट और इम्पोर्टेंट नहीं है, ना ही वो अर्जेंट है ना ही इम्पोर्टेंट है, वो करने के लिए से आपको मतलब ऐसा नहीं है कि भाई आप हर वीक में उसको एक वीक में 10 बार कर रहे हैं तो सडनली आप उसको बंद कर दीजिए. बट यस, ग्रेजुअली यू नीड टू हैव प्लान कि विद इन 6 मंथ, विद इन 1 मंथ आई विल बी क्विटिंग दिस थिंग. ओके, उसको हम डिलीट करेंगे ही करेंगे. जैसे कि कोई काम नहीं है, गपशप लगाने के लिए हम कुछ कर रहे हैं. ओके, टाइम हम बच्चे को भी टाइम नहीं दे रहे हैं, बट पास वाले आ गए तो उसके साथ बैठना पड़ेगा. ओके, और वो रोज आते हैं तो दिन में मतलब एक वीक में 7 बार ऐसा होता है, तो 7 बार में से कम हम 3 बार ऐसा करेंगे अभी इनिशियल फेज में कि हम उसको डिलीट करें. ओके, एंड वी इन्वेस्ट अवर टाइम इनटू अदर 3 quadrants. ओके, so are you getting me, guys? Yes, Yes. this is really needed. When we start giving time to others, we stop giving time to ourselves. Exactly. And trust me, parents, 99% of the people, they do not know what you are going through. So please give importance to you rather giving importance to others. Everyone thinks what I did is right. If I scold that person, it is right. If I did not go to that person, it is right. It's okay. It is okay. You try and give time to yourself. See the difference. Start deleting the particular work which does not require your urgency, neither importance. Start deleting it. And trust me, you would see a difference in the 3 quarters. एक चीज को डिलीट करने से तीनों क्वार्टर्स में डिफरेंस दिखाई देगा. वो तीनों जो बकेट थी ना, उसमें ग्रीन बकेट में ज्यादा आइटम्स आएगी. एंड इट इज नेसेसरी. हाउ मेनी ऑफ मदर्स फील दैट यू डू नॉट हैव टाइम फॉर योरसेल्फ? अपने खुद के लिए टाइम नहीं है. प्लीज राइट डाउन. इफ यू आर फीलिंग दैट आप कॉलेज डेज में या बिफोर मैरिज यू कुड डू दिस बट नाउ यू कैन नॉट डू, please write down me. Yes, please write down me into the chat box, because Wonderful. I am also one of those. Yeah. Even sometimes I feel if Okay. I love dancing, but now with the child we dance on the rhymes, but I've never danced on myself with my own self. So mothers, please write down. Parents, please jot down. Sometimes Yes, Monica ji. right? Wonderful. Great. Okay. So do not tarnish or do not stop living to fill the 2 buckets of orange and yellow. Please give time to yourself. This time management matrix is this. Yes. The last slide, I want you all to read loud. Self-love and self-care. Wonderful. If you do this, nothing can beat you. And it is scientifically proven, it's research based proven that if you can allow time for yourself and pamper yourself, then you will be able to achieve more into all area of your life. We will be able to give more affection to our near and dear ones because we have started loving ourselves. So parents, can we make a dictum from today is that we will fill the time management matrix. Try every day. Please write down yes if you will do it. If you can't, it's okay. We can try. So I am the one who is starting and I'm writing yes, I will fill the time management matrix. Wonderful. Okay, great. Yes. So this was all about how you can manage the time. Many of the people are specifically spending one whole day to understand this matrix and identify the activities they do in the day in day out basis. Okay, और उसको बाद में वो categorize करके understand करके. So जो हमने अभी 90 minutes में आपके साथ जो सारी चीजें हमने share की है, it is really valuable. Okay, people pay thousands and thousands of rupees for this, but no one has ever taken this into the child development or the parenting thing. So हमने सोचा कि ये चीज हम आपको share कर पाए. Okay, so with this I would like to give you a gift, and gift is that we have special discount for all the participants who has attended this session.
जिसके अंदर हमारी जो स्पार्टन पेरेंटिंग एकेडमी हम जो काम कर रहे हैं उसके लिए आपको स्पेशल 20% गिफ्ट वाउचर हम ऑफर कर रहे हैं. ओके, स्टोर वाइड डिस्काउंट इज अप्लाइड. सो दिस इज जस्ट जेस्टर ऑफ ग्रेटिट्यूड कि आप लोग यहाँ पे आए एंड आप लोगों ने अपनी पेरेंटिंग के लिए आप कुछ कर रहे हैं, अपने बच्चों के लिए कर रहे हैं. या आई ऑलवेज फील इट इज रियली इंपॉर्टेंट to do something about our kids and to do something about parenting. Why? Because हम अपने बच्चे के लिए जब काम करते हैं तब हम देश के लिए काम करते हैं. Because हमारा जो बच्चा है वो कल का सिटीजन है. ओके, तो अगर उसके लिए हम अच्छी चीजें कर रहे हैं तो हम हमारे देश को चेंज कर सकते हैं. राइट? ओके, सो यू कैन यूज दिस कोड as a gratitude, as a gift. We are providing this. You can use this code SPA20 and our team has put the link into the chat box. If you want to purchase any kind of things from this 7 category, जिसमें हम रेगुलर फ्लैश कार्ड, जंबो फ्लैश कार्ड, पिक्चर बुक्स, पजल्स, बोर्ड बुक्स, AR फ्लैश कार्ड, AR टी-शर्ट, ये सारी चीजें हम बच्चों के लिए बनाते हैं. ओके, सो इट इज अवेलेबल ऑन अवर वेबसाइट एंड यू कैन परचेस इट एंड यू कैन अप्लाई द कोड SPA20 फॉर द 20% डिस्काउंट. ओके, with this I would like to ask you if any one of you is having any question. So right now we can take the questions. Yes, please. किसी को कुछ भी डाउट है आज के सेशन के बारे में? Any participant, like Monica ji, Premjot ji, who are really active participants. Okay, if you want to ask anything, if you have any doubt, you can please ask. You can raise your question, raise your hand. Okay, and ask the question. If you wish, you can even write down to us. If you feel like that there is something that comes up in your mind, you can feel to write down to us. Spartan Kids is just not coming up with the workshops. They're coming up with better parenting. Yeah. So the reason why, because we have forgotten parenting. We have actually forgotten parenting. Parenting is just not taking care of the child या फिर उसको बाहर लेके जाओ या खाना खिलाओ या उसकी स्कूल विजिट्स करो. Parenting is just not that. Parenting means playing with the child. और हमने ये पूरा एक वर्कशॉप किया था फॉर फ्लैश कार्ड्स जिसमें वी अंडरस्टूड दैट हाउ कैन वी यूज फ्लैश कार्ड्स विद द चाइल्ड, एक्चुअली प्लेइंग विद द चाइल्ड, एंड दैट हेल्प्ड अस टू अंडरस्टैंड द पेरेंटिंग इन अ बेटर वे. So if as parents you feel like that you have something that is stopping your parenting journey, please feel free to write us. If you have any questions, you can ask. Exactly. You can also put your questions onto the Facebook group. आप Facebook group join करो और अपने questions रखें, हम उसमें आपको answer करेंगे. Yeah. With this, I would like to ask the feedback of this particular session, जो कि हमने एक तरह से हमने एक experiment ही किया है कि हम जो पर्सनल डेवलपमेंट के जो टूल्स हैं वो पेरेंटिंग के लिए लेके आए हैं और वो प्रैक्टिकली हम वर्कशॉप में हम अप्लाई करवाते हैं. ओके, सो एनीवन ऑफ द पार्टिसिपेंट वुड लाइक टू शेयर द फीडबैक. सो कैन आई आस्क वन बाय वन? मोनिका जी, वुड यू लाइक टू शेयर समथिंग? या, if you can share your feedback, your experience, कैसा रहा ये वर्कशॉप, it would be great for us. Okay, Monica ji. Okay, you wrote. Okay, I'm sorry. Thank you for the session. You waited for that. Parenthood is more about managing ourselves than child. I wrote, okay, wonderful. It would be great if you can, if you can speak. मतलब बात करेंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा अगर आपको शेयर करना है तो. If you are not comfortable, that is also completely fine. Sir, I would like to add one thing. Yeah. Parenting की journey mother से पहले start होती है, then the father. Because the child is in the 9-month mother's womb, and then when it comes out, it feels other relationship. So as a mother, whosoever, as a father also, as a mother also, it is not a particular gender who is working behind it. Start giving time to yourself. Exactly. Be it just a 10-minute in a day, but give it to yourself. And it could be utilized in multiple ways, like we can do the gratitude, we can praise ourselves, whatever the things we have done well in the day. Okay, all these things can be done. Okay, yes. And parents, all the parents present over here,
Whenever such workshops happen, try and give it to your friends. Give them this insight of the workshop, and ask them also for their opinions, because it is most important. Parenting journey is to share, not to keep it to yourself. So whatever you are doing good for the child, share it loud. Let other parents know. Let other parents feel your experience. And that way, you will be able to give yourself importance. Okay, great, wonderful learning, ma'am. And with this, I would like to, say that we have specifically designed one of the ebook for you, which is 10 actionable tips to manage your time for the mother of toddlers. ये एक ई बुक हमने बनाई है जो स्पेसिफिकली आपको गिफ्ट देने के लिए है। ओके, और आप देख पाएंगे कि ये वर्कशॉप जो है, वर्कशॉप के लिए ही जितने भी पार्टिसिपेंट है उस सब के लिए हमने ये गिफ्ट तैयार की है। सो वी आर शेयरिंग द लिंक ऑफ दिस पर्टिकुलर ई बुक, जो आप डाउनलोड कर सकते हैं, अपने पास रख सकते हैं। बहुत सारे पार्टिसिपेंट्स में पास में जो हमारे वर्कशॉप से, उसमें हमें ये फीडबैक दिया है कि ये जो ई बुक है वो हमारे लिए काफी हेल्पफुल रहती है। हम उसको प्रिंट आउट निकाल के भी वो लोग रखते हैं ताकि वो उसको ना रेफर कर पाए। ओके, सो इट वुड बी रियली ग्रेट। एंड आपकी पेरेंटिंग जर्नी में ये एक और चीज हो जाएगी, आपको हेल्प करेगी। आपको याद रखे, आप ये याद रखेंगे कि आपका टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जा सकता है। वो प्रैक्टिकल टिप्स आपको इस ई बुक के अंदर मिल जाएगी। सो यू कैन क्लिक ऑन द लिंक जो हमारे चैट बॉक्स में है और उसको डाउनलोड कर सकते हैं। इट इज कंप्लीटली फ्री, इट इज अ गिफ्ट फॉर यू। ओके, एंड या विद दिस आई वुड लाइक टू कंक्लूड द सेशन। Thank you very much, everyone. If anyone would have a question, आप कोई प्रश्न पूछना चाहते हैं, not just about this workshop, but any of the topic, then you can ask. I would request you to join our Facebook group as well as our WhatsApp group, ताकि आप वहां पे अपने फीडबैक वगैरह शेयर कर पाए। And yeah, you can ask the question anytime to us on the Facebook group, and हम उस questions को, आपके जो questions है उसको लेके हम उसके ऊपर वर्कशॉप बनाते हैं, उसके ऊपर कंटेंट बनाते हैं, हम इंटरव्यू भी करते हैं। डिफरेंट काइंड ऑफ पीपल, वी टेक द इंटरव्यूज एंड वी शेयर दैट इंटरव्यू विथ यू। अब हम पॉडकास्ट भी कर रहे हैं, वो जो इंटरव्यूज है उसके पॉडकास्ट भी रिलीज कर रहे हैं। तो कभी आप काम कर रही है, से फॉर एग्जांपल दिस वर्कशॉप, यू नीड टू बी लाइव, मतलब आप यहाँ पे लाइव रहेंगे तो आपको ज्यादा अच्छी तरीके से आप उसको ग्रैब कर पाएंगे उस नॉलेज को। बट if you are working in the kitchen, if you are doing something, if you are traveling, even आप कार ड्राइव कर रहे हैं तभी भी आप ऑडियो सुन सकती है, आप हमारे पॉडकास्ट सुन सकती है स्पॉटिफाई पे और दूसरे हमारे प्लेटफॉर्म्स पे, जो भी प्लेटफॉर्म आप यूज कर रहे हैं। ओके, whether it is Apple, whether it is Google Podcast, whether it is Spotify, हर एक जगह पे आपको हमारा पॉडकास्ट मिल जाएगा स्पार्टन पेरेंटिंग एकेडमी का। और उसमें आप वो जो कंटेंट है उसमें आप इंटरव्यू हम लेते हैं एक्सपर्ट्स के, इन्फ्लुएंसर्स के, तो आपको काफी सारी टिप्स मिलेगी अपनी पेरेंटिंग जर्नी को नेक्स्ट लेवल पे लेके जाने के लिए। विद दिस आई वुड लाइक टू सजेस्ट दैट यू शेयर दिस थिंग विद ऑल द पीपल यू नो। ओके, आप जितने भी पेरेंट्स को जानते हैं उसके साथ शेयर कीजिए। ये भी वर्कशॉप हम यूट्यूब पे अवेलेबल करेंगे, तो वहां से आपको लिंक मिल जाएगी, वो भी आप शेयर कर सकते हैं। बट यस, जब भी आप लाइव होते हैं then you are getting more value, and we also allow you to speak, we also allow you to do the activities, we also allow you to ask the questions so that we can answer your question, right? So with this I would like to conclude this session. Yes, Sachi ma'am, would you like to say anything? Nothing, sir. It is great to have parents till the last point of the workshop, because question answer session is the most important thing, and apart from that, their feedback that can help us to improve and get more knowledge about the same. Parents, I request you, start balancing life. It is too short and it is a long way to go with the child. So please be a part of this journey for the parenting. Give time to yourself. Make sure that you manage the time matrix. And with that, you have a smile on your face every time, because your smile is the strength for the little child around you. Okay. I hope that this workshop would have been more with content, and it was self-explanatory with the PowerPoint presentation that we had. And please be a part of this journey, as parenting should never stop. It is a lifelong process. Even if the child turns marriageable age, gets married, you're going to stay parents only. Like our parents are staying parents. So exactly. It's a never-ending journey. Okay. Thank you very much, everyone. Have a nice time. Bye-bye. Thank you.